the worksheet on WhatsApp in a bit. So, what are we doing today and tomorrow? We're doing graphs of logarithmic functions. I'm just writing log functions. Okay. You need to take clear-cut notes now. So please don't be lazy about taking these notes. ठीक है, Fatma and Rahim? You need to note down everything I say. And pencil हो जाए पास तो बहुत अच्छी बात है, but चलो पेन भी चल जाएगा. पेंसिल इसलिए होनी चाहिए कि I'll ask you to draw some graphs. तो अगर वो गलत हो गए तो you can rub it instead of cutting it. So पेंसिल और रबर अगर 1-2 मिनट में ले आओ तो that would be great. और मुझे बता दो वापस आके कि way back so that I can start. You're back, Fatma? No. Oh God, जल्दी करो. Rahim, you have your pencil and eraser? Ma'am, can I use a gray color pencil? हाँ हाँ कर लो, as long as you're able to rub it. मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि if you end up making a mistake, तो बहुत ज्यादा cutting ना हो. Rahim, you have your pencil and eraser? Yes, ma'am. Okay, चलो फिर I'm starting. Fatma, चलो. Okay, अच्छा Yes, जी. ma'am. A grid, another grid. चलो. अच्छा. Log let's say log x and ln x. They're both logs, right? The base of log x is 10. The base of ln x is what? E. So like 2 E. point something. Yeah, E, exactly. And the base of log ax is what? A. Yes, A, exactly. अच्छा. अब the inverse function of log x is 10 power x, क्योंकि remember हम जब log को दूसरी साइड पे ले जाते हैं वो 10 बन जाता है और जो भी नीचे हो वो x वो मतलब पावर में चला जाता है. What is the inverse of ln? What happens when you take ln to the other side? E to the power x? Yes. और फातिमा आप बता सकती हो what happens when we take log a to the other side? Ma'am, a to the power x. जो भी होता है उधर राइट साइड पे जो भी होता है just goes in the power, right? Okay. So if this is fx, तो ये जो होता है ना ये f inverse of x होता है. Okay. If one side is fx, the other one is called f inverse of x. हमने पढ़ा हुआ है ना function और function का inverse in IG math as well. Okay. So the functions on the right hand side are inverse of the function on the left hand side. Also note this down that the graphs of fx, any fx, and its inverse, f inverse of x, are reflections of each other on the line y is equals to x. The graphs of fx and f inverse of x are reflections of each other on the line y is equals to x.
What do I mean by that? I mean that, let's say इधर एक ग्राफ है ये. This is the graph of fx. Then what will the graph of f inverse of x look like? It will be a reflection of this graph on the line y is equals to x. इस पे reflect कर दो. ऐसा कुछ बन जाएगा इधर. यूं बन जाएगा. Yes, ma'am. Okay. What if इसको लेबल कर दो f inverse of x. ठीक है. What if a graph is, let's say, like this. मैं सोच रही हूँ कैसा ग्राफ बनाऊं. Let's say like this. Let's say this is f inverse of x. तो फिर fx का ग्राफ हो जाएगा like this. fx. ठीक है. I hope this makes sense. Yes, Won't it ma'am. be open now? Sorry. Like in the minus area? वो इसलिए नहीं होगा ना कि it Or has is to it be a like reflection. It has to be a reflection on y is equals to s. So this reflects over here. That got reflected over here. ठीक है. इसकी डिटेल में हम आईजी में भी दोबारा बात करेंगे. आईजी मैथ्स में व्हेन यू स्टडी द टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन दिस ईयर एज वेल, उसमें आपको ग्राफ रिफ्लेक्ट करना सिखाएंगे. In ad math, it just has to be a rough sketch. But in math, it has to be a proper sketch. वो ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे. For now, just know that you have to roughly reflect it on the line y is equals to x. Okay. Okay, back to the original theory, which is how to plot the graph of log and its inverse. First thing I'm going to ask you to draw is this a power x. ये कैसे ड्रॉ होता है? अब ये भी आपके सिलेबस में है आईजी मैथ के, और ये भी इसी साल पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल कर्व ड्रॉ करना. बट यू आर लर्निंग इट a little ahead in time from me. A power x का ना ग्राफ हमेशा ऐसे होगा. Whatever is a, if it's a power x, it goes like this. Don't let these lines touch. These can't touch. इसको touch करा दिया, 0 marks. This can't touch. It will get very close, very very close, but it cannot touch. ठीक है. इसके साथ लिख लो x axis is the asymptote. This is called an asymptote. The exponential graph can never touch this line. what X-axis, is called an asymptote? I'm writing it down. Asymptote. आप लोगों ने tan का ग्राफ पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में? Let me just recall that for you. tan 90 मैथ एरर होता है, और उस पे ना आपसे एसिम्प्टोट बनवाया होगा आपकी टीचर ने. फातिमा, आई डोंट नो आप ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ में प्रेजेंट थी या नहीं, बट ये हमने क्लास. Probably not. Yes. इस तरह का ग्राफ होता है. -90 पे भी अगर आप कैलकुलेटर में करो ना tan -90, वो भी आपको मैथ एरर देता है. सो tan 90 आंसर ही नहीं एग्जिस्ट करता. दैट इज व्हाई यू ड्रॉ एन एसिम्प्टोट ऑन इट. और वो टीचर ने बताया होगा कि डोंट लेट दीज टच. टच हो गया तो क्रॉस लग गया. Your graph keeps getting very 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 close to the asymptote as it goes up and down, but touch नहीं कर सकते. ठीक है. ये होता है asymptote. So x-axis is the asymptote. अच्छा, अब क्यों आया asymptote, इस पे भी बात करते हैं. रिमेम्बर, अगर हमारा ऐसा आंसर आ रहा होता था e power x is equals to 0, can e power x
एवर बी जीरो या ए पावर एक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने ए एक्स का ग्राफ बनाया ना, इसके साथ लिख दो बाय द वे, y इज इक्वल्स टू ए पावर एक्स, इसका ग्राफ हमने अभी बनाया। ओके, अच्छा, तो ए पावर एक्स अगर जीरो है तो x इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए जीरो है, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके साथ लिखते थे नो सोल्यूशन, क्योंकि लॉग की इनपुट जीरो नहीं हो सकती, कैलकुलेटर कहेगा मैथ एरर। इसी वजह से होता है, क्योंकि जीरो पे एसिम्प्टोट होता है। दिस ग्राफ डज नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ जीरो एनीवेयर। तो ये ग्राफ जीरो को टच ही नहीं करता, तो इसकी वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती, इसीलिए मैथ एरर आता है। ठीक है, सो एक्स उस उधर एसिम्प्टोट बना दिया, एक्स एक्सिस इज द एसिम्प्टोट, graph cannot touch it, graph can not touch it, it gets very 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 close but it cannot touch it. ओके, अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी जहां पे मैंने क्रॉस बनाया ओरिजिन पे? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 1 x की वैल्यू? आपने मुझे ग्राफ की वैल्यू बताई है, बट यू आर राइट इन अ वे, x की or वैल्यू तो 0. जीरो है ना, हाँ, x इज जीरो, and then a power 0, Fatma, is 1, right? So this has to be 1. ये आपने जरूर लेबल करना होता है whenever you're drawing an exponential graph. You must show कि when x is 0, y is 1. ये इतना दिखाना होता है बस, nothing else is expected from you. एसिम्प्टोट को टच नहीं होने देना होता, ग्राफ शूट अप कराना होता है, 1 जरूर दिखाना होता है, 0 पे 1। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी प्लॉट कर लेते हैं, y इक्वल्स ई एक्स, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, राइट? इट्स स्टिल एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ए में ए कोई भी वैल्यू हो सकती थी, इसमें ए वन हो सकता था, टू हो सकता था, थ्री, वन तो नहीं हो सकता था, टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता था, इसमें एक कांस्टेंट आ गया ई। इट्स स्टिल एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जब भी एक्स इज इन द पावर इट्स एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसको भी बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे, so it's a rough sketch. It looks exactly the same. It shoots up. Do not let it touch its asymptote. And this is 1. एक और बना लेते हैं। ओके, एक और ये है y इक्वल्स 3 पावर x कर लेते हैं, एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले में जेनरिक था a पावर x, दूसरे में स्पेसिफिक था e पावर x, थर्ड इज ऑल्सो स्पेसिफिक। एग्जैक्टली द सेम स्केच, मेक इट शूट अप, डोंट लेट इट टच द एसिम्प्टोट, और यहाँ पे 1, बिल्कुल एक जैसे sketches, because the shapes are the same, there are minute changes, but फातिमा बताओ क्या मसला है? अभी तक मैंने आपको ग्राफ सिखाया है बनाना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? कोई भी नीचे बेस में वैल्यू हो जाती है और इधर एक्स हो जाता है। इट कैन बी 7x, कैन बी 3x, कैन बी EX, इट कैन बी एनीथिंग पावर x। इसका ग्राफ बनाना सिखाया। Ma'am, does it always cross the y-axis at 1? Yes, because when it crosses the y-axis, x is 0. So 7 पावर 0 भी 1 होता है, 3 पावर 0 भी 1 होता है, e पावर 0 भी 1 होता है। सो यस, और हमेशा x एक्सिस इसका एसिम्प्टोट होता है। एसिम्प्टोट मीन्स इट डज नॉट लेट द ग्राफ टच इट। एसिम्प्टोट और ग्राफ की कभी भी कोई इंटरसेक्शन नहीं होती। Don't let your graph touch the x-axis because x-axis is its asymptote. Fatma, any further questions? No, ma'am. Have you noted down the 3 graphs? A power Yep. x. अब Yes.
इधर ए कोई भी वैल्यू है ग्रेटर देन वन, ऑब्वियसली वन पावर एक्स तो हम नहीं कर सकते ना, वन पावर एक्स तो वन ही होता है, वो तो एक कांस्टेंट स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। अगर मैं कहूँ वन पावर एक्स, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, वो तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा वन पे, इट्स नॉट एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो वन ए कैन बी एनीथिंग ग्रेटर देन वन, ठीक है। अच्छा, इस हेडिंग में ना लॉग के साथ स्लैश डाल के एक्सपोनेंशियल भी लिख लो, क्योंकि अभी तो हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, हमने क्या डिस्कस किया था, ई एक्स का इनवर्स क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेंड ई टू द अदर साइड? ln y. नहीं नहीं, नॉट वाई, एल एन एक्स ही अभी हम कहेंगे। ठीक है, बेसिकली इनवर्स ऑफ ई इज एल एन। हम यही कहते हैं ना, एफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ई एक्स एंड एल एन एक्स। ओके, दीज आर टू इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, जैसे साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा, साइन को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं वो साइन इनवर्स बन जाता है, स्क्वायर को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं वो स्क्वायर रूट बन जाता है, क्यूब को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं वो क्यूब रूट बन जाता है। ठीक है, सो इफ ई एक्स इज द फंक्शन, इट्स इनवर्स इज एल एन एक्स। अब एल एन एक्स ड्रॉ करते हैं। What did I tell you about the graphical relationship between a function and its inverse? क्या होता है? They reflect at y is equals to x. Yes, first draw y is equals to x, ऐसे डॉटेड हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। Let's draw a dotted line because it's not part of the actual graph. It's hard to make it dotted on this, but I'll do this. ये हो गया। Fatima, are you copying? Yes, ma'am. Okay, ठीक है, y is equals to x पे अब इसको जब रिफ्लेक्ट कर देंगे ना, that's the graph of ln x. अच्छा, now if you reflect it, it should look like this. ऐसे. And now you get a 1 here. And now this is your asymptote. This is the asymptote of the inverse. इसको नहीं टच कर सकता. Do not under any circumstances make your graph touch this line. Do not let graph touch the asymptote. और ये किसका ग्राफ है? राइट, लेबल इट, दिस इज y इज इक्वल्स टू ln x. Fatma, ask questions. चलो जी, Fatma is MIA. Rahim, ask questions. Ma'am, I have none so far. Okay. Okay, now tell. Ma'am, ठीक. I'm still here. I was just looking to see if I should have a question to ask. ओके, चलो ठीक है, कॉपी हो गया? Yep. ओके, गुड। अच्छा, और फातिमा, लुक एट द थर्ड ग्राफ, 3 पावर एक्स। इनवर्स क्या था इसका? इफ यू हैव टू टेक 3 टू द अदर साइड, हाउ डज इट गो टू द अदर साइड? इसको भी याद है, बता दे। Log base 3x. यस एग्जैक्टली, लॉग बेस 3x। इधर बनाते हैं एक ग्राफ, y इज इक्वल्स टू x। ओके, अब बनाते हैं इसका इनवर्स। सो एग्जैक्टली सिमिलर लुकिंग ग्राफ रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x। और ये क्या ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू
log बेस 3x, ये उसका इनवर्स का ग्राफ होता है। फातिमा, जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट ग्राफ है a पावर x, व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स इनवर्स फंक्शन? Ma'am, do I draw it? नहीं नहीं, यू टेल मी व्हाट इज इट्स इनवर्स फंक्शन। जैसे ex का इनवर्स ln x और 3 पावर x का इनवर्स log बेस 3x। सो a पावर x का इनवर्स क्या? Log base ax. Excellent. So now we draw it. Okay. Since it's an inverse function, you draw the line y is equals to x first. उस पे करो, उसको डॉटेड प्रेफरेबली बनाना चाहिए because it's not part of your actual graph। और उसको लेबल करो कि दिस इज y is equals to x, और फिर उस ओरिजिनल ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर दो ऐसे, और ये बन गया 1। दिस इज 1। Please ask if you have any questions. Class. Okay, moving on. Just give me a second. I'm trying to find my charger. Okay. अच्छा जी. Moving on. I hope everybody has noted this down. Fatma, especially you. फराहिम का तो मुझे पता है वो कुछ ज्यादा ही ओवरली एम्बिशियस हो जाता है नोट्स लेने पे, बट आई जस्ट आई एम टॉकिंग टू यू कि ये प्रॉपरली रजिस्टर में जाना चाहिए सब। ओके, मूविंग ऑन। Now, throughout this lesson, we're going to be talking about variations of this graph. जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक ग्राफ्स किए हुए हैं ना, और उसकी सारी वेरिएशंस डिस्कस की हुई हैं इन द सिलेबस। एक्स स्क्वायर हमें पता है ऐसा होता है, तो फिर हमें ये भी पता होता है माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होता है। फिर हमें ये भी पता होता है एक्स, सॉरी ये ओरिजिन से टच करेगा। फिर हमें ये भी पता होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा होता है। फिर हमें ये भी पता होता है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर -2 का टर्निंग पॉइंट हो गया -1, -2, और ऐसे करके, और इसका वाई इंटरसेप्ट हो गया -1। ऐसे करके ये ग्राफ होता है। वी नो ऑल दीज वेरिएशंस बिकॉज इट्स इन आवर मैथ सिलेबस। इसी तरह एडमैथ के सिलेबस में इन ग्राफ की काफी सारी वेरिएशंस हैं। बाय वेरिएशन, द प्रॉपर नेम ऑफ वेरिएशन इज ट्रांसफॉर्मेशंस। So we have many transformation of these basic graphs that you must know. Let's talk about exponential graph first. ठीक है, अब हम सीख रहे हैं ग्राफ बनाना ax का और उसकी वेरिएशंस का। Okay. So graph of y is equals to 3x बनाते हैं, y is equals to 5x बनाते हैं, और y is equals to 2x बनाते हैं। क्या डिफरेंस होना चाहिए? Apparently they're all exponential graphs. So एक जैसी shapes होनी चाहिए, but of course they'll have slight variations. If I draw the smallest one first, 2 power x, इस तरह का होना चाहिए। Asymptote, make it pass through 1 and it shoots up. इसको क्या लेते हैं? y is equals to 2x। Okay. फिर आ जाता है 3 power x।
पी पावर एक्स क्या करेगा, थोड़ा ग्रेजुअली राइज करेगा, इतनी जल्दी नहीं राइज करेगा, बट इट शूट्स अप क्विकर. Let me try to do a better job. यहाँ से थोड़ा सिमिलर लगेगा और उसके बाद ग्रेजुअल राइज है और फिर शूट ज्यादा करेगा. Because it's 3 now. Y is equals to 3x. Fatma, are you here? Yes, ma'am. Okay, excellent. Okay, and lastly, y is equals to 5x. वो shoot it gradually करेगा, ज़्यादा time लेगा, but when it goes up pretty quickly. Y is equals to 5x. वैसे तो when they ask you to draw y is equals to 5x, just that you just draw something like this, it's good enough. But if there's a need to draw y is equals to 5x and also y is equals to 2x in the same question, so फिर difference नजर आना चाहिए. You must show the examiner कि मुझे पता है 5x ज्यादा जल्दी shoot up करेगा, 2x थोड़ा gradually shoot up करेगा. Once you've noted all of this down, please tell me, फिर मैं अगली बात करती हूँ. Ma'am, before it shoots up, uh, हाँ. y is equals to 5 power x will be lower Hmm. on the like Exactly. the side. Yes. Yes. Oh, की रीजन है क्योंकि x अब नेगेटिव है. लाइक इफ आई से y पावर नेगेटिव 5 पावर -2 या 3 पावर -2 या 2 पावर -2, that means 1/4, 1/9, 1/25. Now this is the biggest value, so that's why it has to be higher, and this is the lowest value, इसलिए ये लोअर होता है. ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा मैं डिटेल में बता रही हूँ. यूजली इन द एग्जाम बस आपको 4 पावर x की स्केचिंग आएगी, स्पेशली इन IGCSE मैथ. व्हाई डू आई कॉल मैथ IGCSE? इन मैथ बस इतना पता होना चाहिए. बहुत कम होगा कि आपको 4x भी दे देंगे और 16x भी दे देंगे. देन यू नीड टू शो अ बेटर कंपैरिजन कि ये पहले स्लो है लेकिन बाद में शूट अप कर रहा है 16 पावर x. बट जनरली देयर इजंट अ नीड, बल्कि मैंने भी जो वर्कशीट बनाई है फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन उसमें भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था. बट ऑफ कोर्स यू नीड टू नो दैट, सिलेबस में तो है. अच्छा, अगली बात. नाउ यू नीड टू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ ax एंड a-x. क्या डिफरेंस है? ये भी मैथ के सिलेबस में भी है. ओके, ax हमें पता है, doesn't touch its asymptote, shoots up. This is 1. We know that about y is equals to x. Now, if the x becomes negative, like if this is fx and this is f minus x का साइन उल्टा हो गया. ठीक है, so what happens? Graph reflects on the y-axis. Graph will reflect on y-axis. When does this happen? When the x becomes negative x. The graph reflects on the y-axis. That means a वैसा graph होगा. This is y is equals to a negative x. ठीक है फातिमा? Yes, ma'am. अगर x का साइन ऑपोजिट हो गया ना, तो आपने ओरिजिनल ग्राफ को y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर. Last thing before we
And this lesson is the graph of ax and minus ax. ax तो रट गया होगा. I really hope it goes something like this. अगर माइनस ना a के साथ है, that is the entire expression gets multiplied with -1, then this reflects on the x-axis. Reflects on x-axis. So now the graph will go like this. This is the graph of negative a power x. Y is equals to negative a power x. और ये है y is equals to a power x. Please revise all of these for the lesson tomorrow. कल हम इसको और complicate करेंगे. अभी तो हम बिल्कुल basics की बात कर रहे हैं. ठीक है, so you must know this very well in order to understand tomorrow's lesson. Okay, guys. See you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz. See.